In this one, I am going to discuss about drug development. Last videos, we have discussed about role of medicinal chemist in drug discovery and development. So now you have a new chemical entity. So now next step is what you have to do. So next step is you have to do preclinical trial, means before the clinic. In that ones, you can do in vitro studies, ex vivo or in vivo studies. In vitro studies means you have to do on cells or cell lines for both safety as well as efficacy. So in vitro, or if you would like to check the safety of the compounds, so you have to use the normal cell line. If results are reported against the normal cell line, that means that is the safety studies regarding that new chemical entities. If you are taking the cell lines of particular disease and then you are testing on your molecules, that means it's a efficacy studies. You are checking whether your molecule is going to be work against that particular disease or not. So that in vitro studies you have to be do first before in vivo studies we have to do in vitro studies. The reason is because by doing the in vitro studies, you can screen large number of compounds. You can imagine in 196 well plate, you can screen 96 compounds in one plate. But is it possible to screen 96 compounds in one plate in animals? No, you need 96 animals if you would like to screen. So means in general speaking, means first every pharma sponsor or every pharmaceutical company is conducting the in vitro studies, particularly for the screening of the compounds, whatever the synthesized by the medicinal chemist, and depending upon the results of in vitro studies, they have to think of which molecule they will going forward in vivo studies, where you have to use the animals and then you have to be give that molecules to the animals and then check the safety as well as the efficacy. Again, in animals also, if you are testing your molecules in a normal animals, means without disease animals, in healthy animals, that means you are generating a safety data. And if you are looking, you are testing your molecule against the animal which is diseased one, that particular disease, that means you that is a safe efficacy studies. So in animals, first you have to be induce the disease by giving particular agents, any chemicals. For example, for diabetes inducing, we are giving the streptozotins, and then you have to validate that animal models. Yes, that is working or not. And after that, you can give your whatever the molecule you would like to test, and then check the biomarkers levels of that particular disease. After in vivo studies, yeah, all these studies data you have to put in a that one we called NDA, not NDA, sorry, IND application, that is the investigation and new drug applications, all your animal data, and all these studies you have to be conduct as per the regulatory guidelines. It's not randomly you are conducting all these studies. It's depending as per the regulatory guidelines which toxicity studies you have to do, how many numbers of animals you have to be used, whether you have to be used rodent, whether you have to use non-rodent, everything as per the regulatory guidelines. You have to generate your toxicities as well as the efficacy data and then submit that data in a form, that is the IND application, to the regulatory authority of that respective countries to take a permissions to start a clinical trials. Means now you would like to start testing that particular molecules in human being. So depending upon the data or regulatory authorities will can ask you queries on data or whatever, depending upon the situations, and if you get a approval, then only you can start a clinical trials. Means you can test your new chemical entities on human beings. So this is about means just a overview about drug development. If I explain in Hindi, means मेडिसिनल केमिस्ट ने आपका मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर दिया, आपका करेक्टराइजेशन से भी क्लियर हो गया कि यस वही मॉलिक्यूल है, इम्प्योरिटीज भी अप टू मीन्स नॉट मच मोर एज पर दी जो आपकी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग है। तो अब आप क्या करोगे सबसे पहले, क्योंकि आपके पास मेडिसिन केमिस्ट ने बहुत सारे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर दिए, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स एनालॉग्स बना लिए। तो इन विवो स्टडी तो पहले नहीं करोगे। इन विवी का मतलब कि आप एनिमल्स पे पहले नहीं करोगे, आप
क्योंकि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप पहले इन विट्रो स्टडीज करोगे। इन विट्रो में आप सेल्स और सेल लाइन्स, प्राइमरी एनिमल सेल कल्चर्स, ये सब यूज करोगे। तो सेल्स को आप पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट दोगे सरवाइव करने के लिए, फिर आप टेस्टिंग करोगे अपने जो भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया है। तो दोनों स्टडीज हमें साथ साथ करनी होती है कि सेफ्टी भी चेक करनी है, एफिकेसी भी। ये नहीं कि आपने एफिकेसी चेक कर ली, सेफ्टी की ही नहीं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी हमेशा पूछेगी कि फिर सेफ्टी सेफ्टी डाटा दिखाइए। तो आप जब सेफ्टी स्टडी करोगे तो आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, सेफ्टी के लिए आप नॉर्मल सेल लाइन लोगे, उस पे टेस्ट करोगे। नॉर्मल सेल्स को कोई हमारा जो केमिकल जो हमने सिंथेसाइज किया वो कुछ हार्म तो नहीं कर रहा है। और जब आपको ये पता करना है कि ये मॉलिक्यूल जो मैंने इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए बनाया है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है या नहीं, तो आपको उसको वो करना पड़ेगा, मीन्स पर्टिकुलर जो सेल लाइन होगी उसके अगेंस्ट उसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये सारा जब आपने इन विट्रो सेल्स पे कर लिया, फिर आप एनिमल स्टडी पे जाओगे। एनिमल्स में भी आप एक तो सेफ्टी देखोगे, एक एफिकेसी देखोगे। सेफ्टी में आप क्या करोगे, एज पर गाइडलाइंस आप क्या करोगे, नॉर्मल एनिमल्स पे डोजेस दोगे। गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अप टू 2000 mg एक्यूट टॉक्सिसिटी करोगे, सब एक्यूट करोगे, क्रॉनिक करने की जरूरत है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी न्यू केमिकल एंटिटीज पे। फिर आपने जब सेफ्टी चेक कर ली उस मॉलिक्यूल की, उसके बाद आपके से एफिकेसी आपको चेक करनी है। तो एफिकेसी चेक करने के लिए आपको पहले तो वो मॉडल बनाना पड़ेगा। सपोज आपने मॉलिक्यूल बनाया हाइपरटेंशन के लिए, तो पहले आपको एनिमल्स में हाइपरटेंशन जो है वो इंड्यूस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, मींस पर्टिकुलर डिजीज की डेवलपमेंट की कैसे करेंगे, कितनी डोज देंगे इतने दिनों तक, तो इसमें हाइपरटेंशन हो जाएगी या डायबिटीज हो जाएगी। तो आप वो उस मॉडल को फिर यूज करोगे अपनी एफिकेसी टेस्टिंग करने के लिए। तो ये सारा डाटा आप एक एप्लीकेशन में सबमिट करोगे, जिसको हम बोलते हैं आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करोगे, वो फिर डिसाइड करेगी, या उसको कोई क्वेरी होगी वो पूछेगी कि नहीं आप ने ये स्टडी क्यों नहीं की, ये करनी चाहिए थी या ये नहीं की। तो इसलिए बेटर है कि आप जब भी स्टडीज प्लान करें तो एप पर रेगुलेटरी गाइडलाइन ही प्लान की जाती है, कि कौन सी स्टडीज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और क्यों नहीं करनी है, अगर करनी है तो क्यों करनी है। तो ये सारी चीजें आप जब आईएनडी एप्लीकेशन में दोगे, तब रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर अप्रूवल दे देती है आपकी उसको, तो आप अपने मॉलिक्यूल की टेस्टिंग ह्यूमंस में कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट ए ओवरव्यू। थैंक यू।